हेलो, how are you all? यार लकी कौन है? Sir, what about you? Yeah, fine. Thanks for asking. Good evening, sir. Actually, it's me, Sapna. I just want to. I don't know why it's showing lucky. You can rename yourself, I guess. Yes, sir, I'm trying, but I don't know how to change it. Uh, okay, tell me with what name you want to rename. Sir, my name is Sapna. Okay. See, is it showing now? Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. That's why I was just confusing who is lucky inside my class. Sorry, sir. Actually, he's my brother. He's using my laptop. That's why maybe he changed Okay, that. okay, fine. No problem. Only 2%. Okay, start by asking your doubts. Let's see how many people come today. So, I'm just having a doubt that sir, whenever I'm trying to solve a DSA question, lead code question, so it take too time to solve. Yeah, it will take. Initially, since you have started, it will take that amount of time right now. With practice, it will be fine. Don't worry on that. So sometime I'm facing that I want to see solution, then after that I done that question. I Yeah, can't even find the logic, sir. yes. So spend half an hour, okay? Maximum half an hour to 1 hour. If you are still unable to do that, see the solution. Don't Okay. don't go beyond that. It will just waste your time. In Okay. my times, cases have happened that I've taken a problem today and then tomorrow I have solved the problem. Such kind of issues has happened with me. Sir, which is the best way to solve DSA? Take pen and paper, visualize the problem, how is it happening, make test cases on your own, that if the case would have been like this, what would have been the solution. This way you will Okay. find out what is the gist of the problem and how the logically it is happening, then code it. Okay. Okay, first The- logically understand what is happening there, then code it. Yes, sir, but sometime I did not even find the logic, sir. So this happens with everyone. See the solution in case you are totally unable to understand what is happening. Okay. Okay, sir. Yeah. Start, who is having any doubt? Start with your doubts. Probably today is the last doubt class that we are taking. Only 4 persons we have today. Who are having doubts? Start with your doubts. Who are having doubts? Hello. Any doubts you are facing? Any problems you are having? We can discuss it today.
Akhilesh, Anjali, Sapna, and Vamsi. सर मैंने आपको चैट में क्वेश्चन भेजा है, वो बता देंगे? चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया। तो नहीं है चैट में कुछ भी। इसका कोई लिंक है तुम्हारे पास? नहीं सर। कहाँ से मिला ये? कहीं से तो मिला होगा ना। हाँ सर, मैं वो ऑनलाइन कर रहा था, उधर से मिला। Replace the sequence of type in editor from left to right where print the current state. Okay. Backspace whenever it is typed. Okay, fine. अगर लिंक देते कहीं से प्रॉब्लम का तो बेटर होता। लिंक नहीं है मेरे पास। एक मिनट मेरे को जरा देख लेने दो। If I am able to find it somewhere. Yeah, question is easy. What is the issue that you are facing with it? Tell me. हेलो। सर आप एक बार सॉल्व करके दिखा देंगे? जरूर। खुद से सॉल्व हो गया ये? नहीं सर। ठीक है, चलो देखते हैं। See, what is the issue here? Let's not do it here. Let's close it. This is the project file. Okay. What's an issue with my? सर नोटपैड पे दिखा दीजिए। नहीं, रन करके दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो समझोगे कैसे। Okay, let's open my previous, and today I will be also uploading for you the project code that we have discussed till now. सर हमें प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे कि हमें चूज करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा, ठीक है। 8 projects are there. You have to choose which one you want to do from them.
ठीक है, you will be getting a form on Monday, which project you want to do. From them, you have to choose, and that's all. Let me open it. See here. Given what? A string will be there, right? String will be there, A, B, C. Along with that, you will be having this character. I don't know means. Let me try. This character, whenever you will be having this character, okay, whenever you will be having this character, it means that it, I don't know, man, what is happening? This character means a backspace. Again, something has happened. Let me. This character means a backspace. Backspace, what backspace does? What does a backspace do? डिलीट करता है. कौन सा कैरेक्टर? मान लो एबीसी है तो वो क्या करेगा? कौन सा कैरेक्टर? एबीसी मैंने, this entire string is in a editor, text editor, okay? So if I now, this is what I have written inside the text editor. If I press the backspace, what will happen? Which character will be deleted? Which one? C will be deleted, right? The most recent character will be deleted. And tell me one thing, if the string is empty, I haven't written anything, and if I press backspace, what will happen? String will delete. Why string? Empty string. What will you delete from the empty string? Nothing. Nothing, right? So it will remain as it is. It is correct? Yes. So when this backspace can delete something, if there is at least one character inside my string, then if I press the backspace, the most recent typed character will be deleted. Is it? Yes. Okay. So what we should do for it? What do you think? Okay. So let's take my input string as of now. Okay. And what is happening? So yeah, let's start with it. Let's take input string, okay, or text editor. Text content, okay, that will be taken as input. That will be a string only, taken the input for that, fine. Now what shall I do? Let's take my the current state of my editor has to be printed, okay. Current state equals to, let's say, empty. Right now, current state is empty string. I haven't put anything into the current state. So let's start traversing one by one into my text content. Or I in text content, okay. Whatever characters have been there into the text content, I will be looking at one by one. So what shall I do? Tell me. Let's take this example. Let's take this example.
This example, let's take it. Okay. So how will you count this? Is this a single character or is it a combination of two characters? What do you think? This one. Combination of two. One is this character, another is this. Combining both, we get this, right? Yes. Okay, so what we have to do here? Let us suppose, firstly, let's check what is my current. If I is my current character, what is it? Let's check that. So if I equal to this, if I equal to this, then what we should do? Okay. If I equal to this, what we should do here, ideally? What we will do? Because we are traversing character by character, right? We are traversing character by character. So this is a separate first character. This is the second character. This is third. This is fourth. Okay. So we have to delete once only, correct? Among these two characters, we will be deleting once. Getting the point? For both, we will not, if there is some string into the current state, okay, we won't delete for both of these characters. We will combine them since both of them constitute a single backspace character. So we have to delete either for this or this. Which one you want to delete for? Tell me that. Dash. Okay, so let's skip this and let's go to the dash. Where is it? Let's go to the dash. That if my current character is a dash, what I should do? What I should do? Delete dash. No, this not should be deleted, right? My entire answer will be stored into the current state. So whatever is inside the current state, if any character is present into the current state, I will be deleting the most recent character. Is it? Yes. Okay, so let's do one thing. How will I check? How will I check if any character is present inside the current state string or not? Any idea? Let's take a variable n and it is initially 0. Since nothing is there into the current state, initially it has no character. Okay. So we will say that, okay, size of how many characters are inside my current state, that is 0. So what we can say that, okay, if n equals 0, if n equals 0, that is if there is no character into the current state, do I need to do anything? Tell me that. No, sir. So what we can say is that delete only if what? There is at least one character into my current state, right? That has to be deleted. So how can I delete that? Delete current state of which character has to be deleted? n-1th character. Is it? Is it? Delete it and decrease the size of my current state string by 1. Got it? Okay, this is how we have handled the deletion. Now next, if suppose any character is coming, if any character x is coming, let's say, now this x will be going inside the current state. Fine. Into the current state, the x will be going. So what we will do? So let's do one thing. First, we will check for this also. If this character is also arriving, do nothing. Just pass. Do nothing. You have to do nothing for it. Else if the character is this, then we will perform the deletion. Else there is a string character or alphabetical character that will come into the text. So what I have to do for it?
just push it into the current state. So what we will say, current state equal to current state plus I. Handled. Why is it error? We have left something here. No quick fixes. What if I do none? Will it work? It's giving me some errors. I don't know why. Let's see. Let's start from here only. No need to give it. Let's do something like this. Else if. Okay, yeah. We're missing one thing. That is, this will not be else if but elif. Sorry for that. Elif, we have some character like this. Let's not do none. Let's pass. We do nothing. Okay. And if there is, if I'm getting a current alphabet, let's do what? Let's add that to my current state and increase the size by 1. Done. Fine. This part is done. So at the end, I will be printing my current state. Let's try running the terminal. Let's see. Let me do one thing. Let me comment them out first. Any other content is left here? Let me check once. No. Okay. Tell me what input you want to give. Let's try with the inputs that has been given into the problem. तो बाइनरी दे सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी दे सकते हैं. ये स्ट्रिंग के हिसाब से आएगा ना. A, B, C. What is it? String does not support item deletion. Okay, yeah. Strings are immutable. Strings are immutable. That's true. Any kind of deletion that we can perform from strings? What do you think? Since deletion from here is not possible, does string supports pop operation? What if I don't delete? I say current state dot pop. Will it be possible? So pop भी deletion का काम करता है क्या? Removal का काम करता है. End जो last element है उसको remove कर देता है. Let's try this. Whether support होता है या नहीं, वरना कोई और तरीका देखेंगे. क्या था? A, B, C. Yeah, it has no attribute called pop because strings are immutable. You cannot change strings. Okay, that's a problem. So let's not do anything like this, but rather let's keep a string. Let's keep a list. Let's keep a list here. Okay, let's keep a list rather than a string. Okay, at the end we will be pushing everything into a string. Okay, and let's rather than this L dot pop, remove everything from the current state. Okay, no need to keep this in.
we can keep also, no problem. And if it is not so, L dot append, we can append our current character I. Okay, this part is done. At the end, let's keep an answer string, and what we will do for I in L. Okay, for everything in L, answer is equal to, we will just concatenate into the answer the content of strings, content of list. Let's see whether we are getting the output or not. A, B, C, what is it? X space T. ABT, correct? Coming? Okay, tell me Yes, sir. what output, what else input you want? Let's run it once more. तो वो जो क्वेश्चन का भेजा आप वो वाले इनपुट डाल दो. नेक्स्ट वाली डालते हैं, चलो. Yeah, everything is coming correct, no problem. Another one we have done, so only Z will be present, so Z is the answer. Okay, you can try it on your own also, everything will be coming correct, no problem. What we have done, any dry run you need, all of you? So कितनों को required है बताओ, dry run? So see, let's take the simple example, ABC Z. Okay, this was the example for I in text content. Okay, what is the text content? Is this is the text content? Fine. For I in text content, I will simply start from A and will end up at Z. If I equal to this, okay, we have a list that is initially empty, and we have value of n also that is initially 0. For I in text content, I will start from A. Okay, I will be taking all the values or all the characters of the text content that we have right now. I will point to them one by one. So let's check. I will start from A. If I equal to this character, is it true? When I is at A, is this true? Is this true? It is false, right? Else if I equal to this, since I is firstly pointing at A, this is also false. So else will be executing L dot append I. I is at A will be appended into the list. Okay, and value of n will be incremented by 1. Done. Next, go back to the loop. What will happen? I will now take the value of B. Okay, now what will happen? Tell me. When I points to B, what will happen? What is the value of I? B. Is it equal to any of them? Either this or this? No, right? So what will happen? The else part will be executing. What will be happening? B will be pushed inside the list. Value of n increases by 1. Done. Okay, again start. I goes to C. I equal to the arrow mark or the dash. Again, both of them are false. So else part will be executing. What will happen? L dot append I. C. Append it. Value of n increases by 1. Done. Now I goes here. Now I goes to this character, arrow character, left arrow. So when I is at this character, this condition is true, right? This condition is true. Here it is simply written pass. That okay, do nothing. Just pass from here. Do nothing. Pass means do nothing. Okay. So if has been executed, both will not be executing right now, since one of the conditions was already true. So now do what? Go to the next character, that is the dash character. Now I is here. So what will happen? Which condition will be true here? Tell me. Which condition will be true? This condition will be true, right? I equal to the dash. This was false. This one will be true. So what will happen?
if n is 0, n is greater than 0. Is n greater than 0? Yes. So L dot pop, remove the last character of the list, removed. And value of n will be updated to n minus 1, that is 2. It will go back to the loop. Now again, I points to Z, I points to Z. What will happen here? What will happen here? Again, for I to be Z, both the conditions are false. This is true. So what will be happening? L dot append I. Append Z inside the list. Did. Now next, what will happen? So entire string is over. Any character is left? No. So what will happen now? Tell me. Made an answer variable. Already made an answer variable. Made an answer variable. This is an empty string. This is an empty string. So do what? One by one. And this is my list, ABZ. One by one, concatenate all of them to the answer. Concatenate. First, answer is empty. Concatenate A. What will happen? Answer will be equal to A. Concatenated. Next, concatenate B. B comes in. Next, concatenate Z. Z comes in. This is done, and at then print answer. ABZ will be printed. Getting it? How is it happening? Yes, sir. All of you? Any doubts or confusions you are having? Just a stack-based problem, you can assume it to be, okay? The stack-based problem. If any backspace is coming, just remove the top element. That's all. This is what the basic logic of the problem is. Any doubts else you people are having? Tell me that. Any other doubt? What is the complexity of this problem? Can anybody tell me? Time complexity and space complexity both. Time and space complexity of this problem. Can anybody tell me? How many times each of the character inside string has been visited? The text content. How many times each character has been visited here? Inside the string, not more than once, right? Every character is visited exactly once. So if the size of the text content is n, what is the time complexity? Big O of n, right? Not more than n operations I do. What is the space complexity? What is the space complexity? What extra we have used here? This list, right? And this list is being main thing that has been used extra for keeping a track of most recent element. What can be the maximum size of the list? If suppose no backspace is there. A, B, C, D, E. This is my entire string. No backspace is there. So list will be storing what? All the characters, right? A, B, C, D, E. All the characters will be inside the list. So if the size of my text content is n, list will be storing n items exact. So what could be the maximum extra space that we are using? Big O of n. Okay. This is what the time and space complexity of my problem is. Big O of n and big O of n. Any doubt? Any doubt? Any more doubts you are having? Sir. Any more doubts you are having? Anjali, Sapna, Akhilesh, Suraj, any doubts? किसी भी कॉन्सेप्ट से कोई भी डाउट है बोलो.
अंजलि, सपना, अखिलेश, सूरज, एनी मोर डाउट्स? चलो अखिलेश ने तो पूछ लिया, बाकी 3? सूरज, यस सर। क्या डाउट है बोलो। सर आपको सर वो सर टेस्ट आपको सर हैकर रैंक पे हम लोग को लिया गया तो उसमें कंफ्यूजन थी सर। दिखाओ दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है। सर अभी तो रुकिए सर देखते हैं। लिंक दो, देखते हैं, ठीक है, देख ही लेते हैं आज। ओके सर। सर उनमें मुझे कोडिंग पार्ट में दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा ठीक है, सर। चलो देख लेंगे ना अभी। लिंक दो मेरे को, क्या है। All other concepts are clear to all of you? Whatever we have covered till now? See, this is perhaps the last doubt class with me of the entire batch till whatever DSA you have learned. You can ask anything you want. सर आई सेंडेड। Let me open it. How many of you are giving the retest today? यार मेरे यहाँ से तो प्रॉब्लम होगा लगता है। सर खुलेगा साइन अप नहीं। करिए सर हो जाएगा शायद। नहीं, मेरा लॉक्ड इन है ऑलरेडी, ठीक है। साइन अप करके मेरे यहाँ पे कुछ होगा नहीं, इतना मेरे को तो लगता है। सर आई थिंक 4 या 5 पीपल दिए थे रीटेस्ट। आज का तुमने भी दिया है? यस सर। ओके, तुम अपने स्क्रीन से खोलो और मुझे कंट्रोल दो, फिर मैं दिखाता हूँ। ओके सर। ठीक है, स्टॉपिंग हियर। कौन कौन था? आज के रीटेस्ट में कौन कौन था? सर हमको याद नहीं सर। सर शेयर करो स्क्रीन खुलने के बाद। ओके, व्हाट क्वेश्चन इट इज? बताओ किस किस में प्रॉब्लम हो रहा है। सर आपके पास कंट्रोल है सर। बताओ कौन कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है।
सर असल में सारे ही नहीं समझ में आ रहे थे अच्छे से, थोड़ा अच्छा रिपीट कर दीजिए सर। चलो मीडियम नहीं, इजी से देखते हैं, ठीक है। एक ही है ना इजी। Two given arrays A and B of same size n, you can perform the following operation on A multiple times. Select a non-empty subarray of A and reverse it. Is it an easy question? मैं यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। यार थोड़ा लैग है तुम्हारा स्क्रीन उस तरफ से। Select a non-empty subarray of n, reverse it. In other words, select L2R, okay, from 0 to fine and reverse it. Print whether you can convert A to B by performing following operation of A on A multiple times. You can select the same subarray multiple times. Fine. ये क्या क्या लगता है इस क्वेश्चन में किस तरीके से होना चाहिए? Anyone can have any idea? How should I approach the problem? Hello. See, the basic question is. सर मैं बताऊं थोड़ा सर जो बोलो। हमको समझ में आया था सर। सर मुझे लगता है दो सब अरे बनेंगे जिसमें जो क्या कहते हैं सर, जो एक छोटे एलिमेंट को लेगा और सर सबसे बड़े एलिमेंट को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सी यहाँ पे देखो, ये जो 10 है ना, ये जो 10 है यहाँ पे प्रेजेंट है, नेक्स्ट एरे में प्रेजेंट है। बेसिक क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द जीस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, this is array A, this is array B, okay? If I rearrange the array, if I rearrange array A, okay, can I change it to B? This is the question. मतलब सर समझे नहीं। अगर A में A है ना, A को कुछ भी तरीके से रीअरेंज कर दो, किसी भी तरीके से A को रीअरेंज कर दो, सारे एलिमेंट्स को इधर उधर करके देखो, किसी भी रीअरेंज करने के बाद क्या मुझे B मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ऊपर देखते हैं। Where is it, man? See, 1 2 3 8 9, इसको रीअरेंज करो तो इसका परम्यूटेशन निकालो। अच्छा 1 2 3 8 9 का क्या एक परम्यूटेशन ये है 3 2 1 9 8। इज इट अ परम्यूटेशन ऑफ ए? परम्यूटेशन मालूम है ना, व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? यार ये बड़ा अजीब काम कर रहा है सीरियसली। Tell me one thing. Do you know what is the meaning of permutation? First tell me that. Permutation means, okay, rearranging. What do you mean by rearranging? 1 2 3 8 9. How can I change it? 2 3 2 1 8 9. 3 2 1 9 8. Okay. Swap 8 and 9. Swap 8 and 9. What will happen? 1 2 3 9 8. Okay. 1 2 3 9 8. Next, do what? Change 3 and 1. Change the position of 3 and 1. Rearrange the position of 3 and 1. What will happen? 3 2 1 9 8. By this, I am able to get this. If the question is, if I rearrange my array A, okay, after any kind of rearrangement, can I get this array B? This is the main question. So तुम कैसे करोगे बताओ? A को rearrange करो कैसे भी, क्या मुझे B मिल जाएगा? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो कैसे करोगे, क्या लगता है? अब देखो कब नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तुम एक बात मुझे बताओ, 10 है यहाँ पे, ठीक है, अरे ए के अंदर 10 है, क्या कोई भी 10 प्रेजेंट है बी के अंदर? है प्रेजेंट? 10 इज प्रेजेंट इन, बट 10 इज नॉट प्रेजेंट इन बी। सो अगर एक भी एलिमेंट
if at least one element in A is present that is not present in B, then we can say simply that A No. after any amount of operation cannot be converted to B. This is the main thing. So क्या कर सकते हैं बताओ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ तो बताओ यार. यार अगेन क्या कर सकते हैं बताओ, इनपुट कैसे लेंगे? Let's take the input n equal to what? कैसे इनपुट लेंगे बताओ? ले लिया. नेक्स्ट L सॉरी लिस्ट A कैसे करेंगे बताओ? लिस्ट A को कैसे इनपुट लेंगे? एम्प्टी अरे ले लेंगे. इनपुट डॉट क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे ऐसा कुछ. Yes, sir. एंड देन Strip. Yes, sir. strip may not be not appropriate here, right? Yes, sir. What else is required for taking the input? Sir, map, I guess. Yes, map with what? So, int. Yeah, why int? Sir, Because because we required integers, not Yeah. a string number. yeah, exactly. Very good. Next, A has been taken input like this. In the similar Yes, manner, sir. should I take the input for B? Yes, sir. Okay, have I written the correct syntax? Tell me that first. This is the way we take input for all integer, for an integer array, let's say. I don't know why this is not working, or is it working with a delay? Okay, what else we can do? So one easy way of doing this is sort. Sort both A and B. Sort A. Okay, is it the way to sort? No, this is not the way. Okay, A dot sort, I guess. A dot sort, yeah. Sort it. Next, B dot sort. Yes, sir. Sort this also. Next, compare. If A equals B, sorry, then do what? Print. Yes. Else what? Print. Int no. That's all. ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें. Try running it. What is the answer we are getting? No response. Why is it happening? Output कुछ नहीं आया. So map का कुछ. Okay, yeah, we haven't typecasted, right? Yes, sir. It has to be typecasted, correct? Yes, sir. To list. That entire thing is a list. यार यार आज और कोई आया नहीं क्यों? Syllabus is over, that's why. तो मैंने ग्रुप में डाला था इनवाइट का लिंक. अच्छा ठीक है, क्या कर सकते हैं? Sir, project का कितने weeks तक चलेगा? एक week, full 1 week you will be having project. After 1 week, front end classes started. Yes, so first test case, both of the test case has passed, submit it. Yeah, your front end class will start after that, okay? Okay, sir. Yeah, everything has passed. हो गया? सूरज चला गया क्या? No, no, sir. He's in Yes, class. sir. हो गया? Yes, sir. कैसे किया समझ आया? Yes, sir. दोनों को सॉर्ट करके कंपेयर कर दो.
दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना और सिंपल अप्रोच है, एकदम सिंपल। एक बार ड्राई रन करना, समझने की कोशिश करना कि अगर कोई भी सब एरे को सिलेक्ट, रैंडम कोई भी सब एरे को सिलेक्ट करके रिवर्स करते हैं तो क्या होता है। I know this will be quite a little bit difficult to analyze, okay? Yes, sir. What is happening is that the question is saying 1 2 4 9 8, okay? Select any sub array. This is a sub array, correct? 2 4 9 is a sub array. Reverse it. So how Yes, my sir. array will be looking like? 1 9 4 2 8. Now select this sub array. This is also sub array. Reverse this entire sub array. How it will look like? इस सब एरे को रिवर्स कर दिया, कैसा दिखेगा, कैसा मेरा एरे? 4 9 1 2 8, राइट? सर एक बार और रिपीट करिए सर जरा। ओके, सिलेक्ट एनी सब एरे 1 Yes. 2 4 9 8, ओके, कोई भी सब एरे बोलो। सर यही ले लेते हैं 1 2 4 9 8। इसको रिवर्स करोगे? अच्छा, फुल टेक द एंटायर सब एरे, टेक द एंटायर एरे एज द सब एरे एंड रिवर्स इट। सर 8 9 2 1 8 9 4 2 1। नाउ और कोई सब एरे लेना है तुम्हें, बोलो। 9 4 2, let's say, take this Yes, and sir. reverse it. How your array will look like? 8 2 4 9 1, right? So continuously do one thing, take random sub arrays and continue reversing till the time you get that, okay, after any number of operations am I able to get array B? This is the question. So this entire thing is basically telling you after any rearrangement of array A, is it possible to get array B? That's all. So what is the simplest way to check? Sort both A and B, and check whether they are equal or not. If they are equal, say yes, say no, else say no. That's all. Both ways you can do this using either sorting or you can use hashing also. Okay. Okay, sir. Fine. This is a good बस question. इनकी प्लेस इनकी सेम नहीं होनी चाहिए ना सर? किसकी? रहने की, जैसे फर्स्ट वाले जो लिस्ट है उसके सेकंड लिस्ट बी की, क्या होगा? मतलब प्लेस सेम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। प्लेस मतलब समझा नहीं। मतलब सर जैसे Sir, कि index value. Nothing as such. It may be that, okay, list also 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, both the lists are same, okay? Yes, You don't sir. need to do anything, no number of operations, zero. After performing 0 operations you can get array B. There is nothing as such you have to do something, okay? Even if you don't perform, even if they are equal, you can say that, okay, I can get B from, I can get A from, I can get B from it. Okay? After any number of rearrangement, I can get array B from array A. That's all. Okay. This is a good question, but fact is तुम लोग ने ऐसा क्वेश्चन कभी किया नहीं है, ठीक है ना? मेजरली ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे कोड फोर्सेस में मिलेंगे, ऐसा प्रॉब्लम। ओके सर। दैट्स व्हाई मुझे देख के ज्यादा देर लगा नहीं क्वेश्चन करने में कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है सर? थोड़ा अपने से देखना पड़ेगा सर इस कोड। यस, इसको देखो, ठीक है? ऑल ऑफ यू रन, ड्राई रन इट। इसीलिए मैं, दैट्स व्हाई आई टोल्ड सपना दैट टुडे ड्राई रन द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑन पेन एंड पेपर, व्हाट इज हैपनिंग, देन कोड। How many times we have required here to code? 10 minutes, even not 10 minutes, I guess. Some 5 minutes and 7 minutes. Yes, It- sir. It took us. Else, और कौन सा करना है बताओ? सर एक बार हार्ड वाला दिखा दीजिए वो करके। दिखाते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले वो देखने दो। But yeah, given an array A of size n, find an index I such that sum of elements from 1 to I minus 1 equal to I plus 1 to n. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें है क्या? बट ये तुम्हें 1D DP अच्छे से आना चाहिए। Okay, if there are multiple such position, find the position which is closest to the left end of the array. That is the smallest index you have to print. Okay, smallest index such that, बोला है ऐसा,
1 2 2 1. Okay, let's say this is my array. Yes, sir. So this is my index. They have said one based indexing. Assume that array starts from index 1. Okay, this is what they have said. 1 2 3 4. Hmm. So tell me, starting from element 1, add all the elements till index I. Okay, this is 1. And then start from index I plus 1 and end at index n. Sum of all the elements from 1 to I and sum of all the elements from I to n, I plus 1 to n. Are they equal? If equal, then print the index I. This is the question. तो बताओ इस एरे में ऐसा कंडीशन कहाँ आ रहा है? बताओ मुझे. सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हो आप? सर, क्योंकि सर a प्लस आई होगा तो a1 प्लस होगा ना i में, तो जो पहले ऐड हुआ रहेगा तो उसके आराम 1 से, प्लस जस्ट ठीक है, आराम से देखो. स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 1, go till index I. Go till index I. Sum Yes. of all the elements from index 1 to index I. From 1 to index I, sum of all elements. ठीक है? Yes, sir. And sum of all elements from I plus 1 to n. Okay, sum of all elements from index I to index n. Index I plus 1 to index n. Are these sums equal? If it is, print the value of I. Question is this. Question is this. So tell me, in this array, how many such I exist? कौन सा इंडेक्स है such that एलिमेंट 1 से लेके I तक का जो सम है I plus 1 से n तक का भी वही सम है? Yes, sir. कौन पर सा ये सम तो सेम हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें इंडेक्स ले रहे हैं और इसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं ना, इंडेक्स है. ठीक है, बताओ. देखो 1 and 2. Yes, 1 sir. plus 2, is it equal to 2 plus 1? Tell me that. Yes, Starting sir. from 1 is at index 1, 2 is at index 2, 3 Yes, is sir. at 2 is at index पर 3. सम करेंगे तो इक्वल ही होएगा ना, 1 plus 2 और 2 plus 1 सम तो 3 होएगा ना दोनों का. हाँ, तो इन दोनों का तो क्या इसका आंसर क्या होगा? Similar. Index 2, right? Index Similar. 2 is the answer, right? Yes, So sir. ऐसे अगर मल्टीपल इंडेक्सेस पॉसिबल है, मान लो एरे के मल्टीपल इंडेक्सेस हैं जहां पे ये चीज ट्रू है, तो स्मॉलेस्ट इंडेक्स को प्रिंट करना है. ठीक है, ये तो जस्ट एरे है. मान लो कि एक केस ऐसा है, मान लो. ठीक है, दिस इज द थिंग. बट पता कैसे करेंगे? पता कैसे करेंगे कि चलो पर्टिकुलर इस इंडेक्स पे, पर्टिकुलर एट इंडेक्स आई 1 to I, sum of 1 to sum of all elements from index 1 to index I, it is equal to sum of all elements from I plus 1 to n. पता कैसे करेंगे? Any idea? Tell me one thing. 1 2 2 1. This was my array, right? What is the entire sum of the array? Sum of the entire array. What is it? 6. 6 है. Okay. Let's start from index 1. Yes, sir. Let's say from, what is the sum from index 1 to index 1? From 1 to 1. For a single element, what is the sum? 6. 1 है ना? Sum of entire sir. array is 6. Starting from index 1 and ending also at index 1. Only Yes. one element I am considering. What is the current sum? 1, sir. 1. अच्छा मुझे बताओ, अगर 1 to I का सम 1 है, तो I plus 1 to n का सम कितना होगा? I plus 1. I plus 1 से लेके, that means if I, current I is 1, right? At index 1 my I is lying, correct? Yes, sir. So I require this sum, the remaining sum of elements. How will I find it? What is it equal to? 6 minus 1. देखो तो है. Yes, sir. Is it है? Yes, sir. I got it. 1 to I का सम 1 है, तो I plus 1 से लेके n तक का सम कितना होगा? 6 minus 1 के बराबर है. Yes, sir.
है, चलो ठीक है। अब आई यहाँ पे आओ, आई चला गया 2 पे, आई आ गया इस 2 पे, तो क्या होगा? 6 1 से minus 2. from 1, starting from 1 I am ending at 2. From 1 to 2, what is the sum? What is the sum? From starting from element 1 to index 2, what is the sum? 3, is it? Yes, sir. यस सर। तो यहां से लेके यहां तक का सम क्या होगा? 3, sir. 3 से लेके 4 तक का सम क्या होगा, पहले बताओ। कैसे फाइंड आउट 3. करूंगा? 6 minus 3 6 minus 3. Yes, sir. यस सर। होगा? तो क्या करना है Yes. फिर बताओ? सर हम रिड्यूस करते जाएंगे ना, जैसे क्या जैसे करेंगे हम फिर? क्या इंक्रीज करेंगे करेंगे फिर? वैसे वैसे हम पीछे इंडेक्स नंबर को इंक्रीज डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे इंडेक्स में हम आगे लेके जाऊंगा, एक करंट सम रख लेंगे, उसमें Yes, मैं sir. करंट एलिमेंट को ऐड करते जाऊंगा, और सम जो टोटल सम ऑफ द एरे है उससे माइनस करते जाऊंगा। Yes, sir. चेक करेंगे दोनों का, जो माइनस करने के बाद सम को, जो करंट वैल्यू करंट सम है और जो सम का नेट वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं है, तो आई को प्रिंट करके वहीं लूप ब्रेक कर दो। Okay. एल्स क्या करो? एल्स ऐसा कुछ है यहाँ पे कि नो सच एलिमेंट इज पॉसिबल, तो आंसर क्या होगा? फाइंड अ पॉसिबल, अच्छा ठीक है, देयर मल्टीपल सच, मतलब एटलीस्ट वन पोजीशन शुड बी देयर, ओके, एज पर द गिवन क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू कोड इट। ये हार्ड नहीं है, ये इजी प्रॉब्लम है, डराने के लिए बोल दिया हार्ड है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। सैंपल आउटपुट पोजीशन 3 is the answer because okay, let me check the explanations also, since there is only one sum of elements before it is 0. Seven, 5, 12, 13, 14. Let me check once कि तुम्हारा कंडीशन क्या है। ओके सॉरी, 1 to i minus 1 कंसिडर करना है, ठीक है, 1 to i minus 1 कंसिडर करना है, एंड देन i plus 1 to n कंसिडर करना है। The current element I should be excluded from the sum. Okay, this is it. So let's try doing this problem. So there are some corner cases as well that has to be taken into the mind. Okay. क्या लेना है, क्या क्या इनपुट लेना है हमें? Okay. Next, how shall I take the input for array? List of what? Map. int input dot split. Okay, is it? ठीक किया हमने? सर ऊपर n is equal to होना था ना, वो थोड़ा इक्वल सी है ना? confuse- ठीक है, चलो। So okay, what is the current sum right now? What is the current sum? Initially 0. Okay, current sum initially is 0. So let's and yeah, I have to find total sum of the array. I have to find total sum of the array. How will I do it? Initially, what is the total sum of array? Let me store it inside S. How will I do it? Sum of A. Okay, simple. What is required is, okay, what is required? Let's suppose this is my array. If I am standing here, if my current element is this, I have to check whether sum of this and sum of this are equal or not. समझ गए बात? यस सर। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? ith एलिमेंट पे अगर मैं स्टैंडिंग हूं, तो दो, उसका जो दो हाफ बन रहा है ना, प्री हाफ एंड पोस्ट हाफ, आर दे equal or not? Are there some equal or not? So how will I do it? What do you think? So what should we keep?
Okay, let's first start iterating over the array. For I in A, let's say. Okay, simple करते हैं. So current sum, I am including current sum. Into the current sum, I will be including what here. And let's keep a pre-sum also. Is it required? Okay. Yeah, So let's. Yeah, tell me. second line में आपने input के बाजू में bracket नहीं दिए. Which one? Second line. वो तो टाइप कास्टिंग के लिए होता है ना, ब्रैकेट्स जरूरी नहीं है उधर पे. ब्रैकेट लिया है ना? प्रॉब्लम क्या है? तो मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ ना, कंसोल से इनपुट आ रहा है. See what will happen. Current sum will be equal to, into the current sum, let's add I. So okay, मुझे एक बात बताओ. If I am right now at element I, what should my current sum have? 0 sir. Current sum में क्या होना चाहिए? मान लो मैं इस एलिमेंट पे खड़ा हूं. I am at the third element of my array. What should the current sum store? What should the current sum store? Element sum from index 1 to index 3. Okay. Current sum should be storing all the sum, all the element sum from index 1 to index I. That should be the content of my CS, current sum variable. Okay. So how will I get the post half? How will I get the post half? This sum I want. How will I get it? How will I get it? How will I get it? Current sum is having what? If I am standing at 3, current sum will be having what? 1 plus 2 plus 3. This will be the sum of. And what is the sum? Sum of the entire array? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Is it? So if चलो S से CS को माइनस कर दो, ये पोस्ट हाफ का सम मिल जाएगा? मिल जाएगा? कुछ तो बताओ भाई. If I subtract from the entire sum, if I subtract the CS current sum value, will I get the sum of the post half? Yes, sir. Yes sir. Let's do that. Let's do that. What we will do? Post half sum. What it will be? Equal to sum minus current sum. Fine. And pre half, ये half चाहिए तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5. If I am standing here, I want the sum of this. तो क्या करेंगे? बताओ. CS में क्या stored है? Current sum में क्या stored है? 1 plus 2 plus 3. So how can I get this sum? Total sum minus CS. Is it? Simply CS minus I. अगर कर दिया तो हो जाएगा. What is the current sum I have? 1 plus 2 plus 3. What is my current element? 3. Remove that. I am getting the pre half, right? Yes, sir. Yes Is sir. it? चलो करते हैं. So how will I get the pre half? CS minus I. Current sum minus I. मिल गया. What I have to check? Whether the pre half or post half are equal or not. This is it. If okay, yeah. So one thing, let's take my index. Let's start my index. Index is initially 0, and whenever I will be entering that loop, let me increment my current index by 1. Okay. Since the indexing is starting from 1 as per the given question. So what will I do if pre half equals to the post half? If this is true, do what? What I have to do? Print the index
and then break. Simply break from here. Nothing else to be done. Okay, this is the question. Now let's try running this. Okay, no response. क्यों, क्या हुआ? Okay, sorry, input लेने में गड़बड़. So is it what you were talking, Akhilesh? This one? Yes, sir. Okay, sorry for that. Okay, like means couldn't get your point at moment. Let me see whether we are doing it correct or not. Okay, see, sample pass हो गया? Yes, sir. Submit करो. Submit it. कुछ issues perhaps आ रहा है, पर क्या, यही तो बात है. Let me see what is the output format. Kuch index for some cases maybe the index is not coming up. Okay. But it has not been mentioned either. What to do if there are no such indices? Array is assumed to be find such that कुछ तो बताया नहीं है यार कि अगर इंडेक्स वैसा प्रेजेंट है ही नहीं तो क्या करेंगे. सर एक बार टेस्ट केसेस चेक कर लो ना, क्या इशू होएगा उसमें. टेस्ट केस देख सकते हैं, देख ऐसा कुछ है. सर यस, टेस्ट के बाद तो शो हो जाते हैं वैसे ना. व्यू रिजल्ट्स नो रॉन्ग आ रहा है. टेस्ट केस देख सकते हैं डाउनलोड, या बात तो सही है. डाउनलोड में देखना तो 100-111. ये केस क्या आ रहा है पता है कि तुम्हारा कोई इंडेक्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या प्रिंट करना चाहिए. एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं. ये क्यों नहीं आ रहा है यार. सूरज तुमने जस्ट 12 दिया है ना अभी. Yes, sir. भाई तुमको कंप्यूटर साइंस का इतना शौक चढ़ा कैसे. अच्छा, सो इफ नो सच थिंग इज एग्जिस्टिंग यू हैव टू प्रिंट -1. ओके, बट दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. दैट्स व्हाई आई गॉट टू बी लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. चलो कर देते हैं, इसमें क्या है, अभी सॉल्व हो जाएगा. अरे क्वेश्चन कहाँ, कोड चला गया. सबमिशंस, कोड नहीं मिलता क्या. सर मिल जाएगा ना सबमिशन में, व्यू रिजल्ट में जाके ना. चलो देखते हैं. ओपन इन एडिटर सर. Okay, fine, let's do it. Let's break it and okay, just see if there is no answer, what will be happening. IDX will be, the value of IDX will be equal to n. The value of IDX will be equal to n. If this is true, just print -1. If your index reaches the last point, that no such element at all exists, no such index exists such that its left half and right half equal sum. So we will print for those cases -1. Okay, and how will I check? The index will be reaching the last index. The IDX value will be reaching the last value, that is n.
सर -1 ही क्यों, 0 भी तो दे सकते थे। -1 तुम्हारा आंसर में चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो एक्सपेक्टेड टेस्ट केस का जो रिजल्ट है उसमें क्या आ रहा है, ये तो इनपुट है, यहाँ पे कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का सम इक्वल है। क्या ठीक है, पता तो सर जो और भी नहीं हो रहे हो तो उसमें भी वैसा ही दिखा रहा हो। नहीं, ये तो -1 है, पर्टिकुलरली सबके लिए -1 है। ठीक है, Okay. क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मेंशन कर देना चाहिए था कि -1। सर एक बार रन कोड करके देख। देखो अब आ जाएगा। देखा सर, वही कह रहे थे, एक ना एक गलत आएगा। यार ये क्या हो रहा है, चलो इसका भी देख लेते हैं क्या इशू है। अब तो सारा पास कर गया। ओके ओके, समझ गए समझ गए, एक केस हैंडल नहीं हो रहा है। चलो बैक चलते हैं और सबमिशंस में देखते हैं। ऐसे नहीं करते, ये थोड़ा एक केस हैंडल नहीं होगा इसमें। अरे ये तो एक्सेप्ट दिखा रहा है, वो पहला वाला ना। यह सब पहला ही वाला होगा, यही है। नहीं नहीं, ये एक्सेप्ट दिखा रहा है, पढ़िए। ये देखिए सर, टेस्ट केस 1 इज नॉट रनिंग, पर ऐसे नहीं करते। चलो सारा टेस्ट केस पास कराने के लिए कुछ और करते हैं। ये एक्सेप्ट कैसे हो गया? एक काम करते हैं, एक वेरिएबल रख लेते हैं अलग से, ठीक है, कि आंसर मिल गया f इक्वल टू लेट्स से फॉल्स। इनिशियली कि आंसर मिला ही नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स से। अगर आंसर मिल जाता है तो f को ट्रू कर देते हैं, ठीक है ना। आंसर मिल गया तो f इक्वल टू ट्रू। यस सर। ओके, इफ आंसर नहीं मिला, आंसर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे? f इक्वल टू, अगर f इक्वल टू फॉल्स है तो प्रिंट -1 कर दो, दैट्स ऑल। आंसर मिला ही नहीं तो f का वैल्यू फॉल्स रह जाएगा, मिल गया तो ट्रू रहेगा। ओके, आई थिंक ये f कैपिटल है ना, चलो इसी को कैपिटल कर देते हैं। नाउ लेट्स ट्राई रनिंग। ओके, एक सिंगल, अगर एलिमेंट सिंगल है ना, उस केस के लिए हमारा प्रीवियस कोड काम नहीं करेगा। क्या हो रहा है यार? स्टेटस क्यूड, अच्छा। हेलो, यस सर। ये क्यूट क्यों हो गया? हो गया अच्छा, सर। हो गया सर, चलो ठीक है। ट्राई करना खुद से एक बार, समझ आया, बेसिक Yes, जिस sir. पता लगा क्या हो रहा है। सर कि सर पहले सर थोड़ा थोड़ा आया है कि यही हो रहा है कि सर जो एक अलग इंडेक्स लिया गया है सर। इंडेक्स आई पे हूं, ठीक है, कौन सा इंडेक्स है मेरे एरे में, कौन सा इंडेक्स है, ठीक है, सच दैट कि उसका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों का सम इक्वल आ जाए, ऐसा इंडेक्स फाइंड आउट करना है। इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं है -1 प्रिंट करना है, ठीक है। क्या sir. किया, करंट सम रख लिया, करंट सम रख लिया कि अगर मैं ith इंडेक्स तक जा चुका हूं, राइट नाउ मैं इंडेक्स i तक जा चुका हूं, तो इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स i तक जितने भी एलिमेंट्स है उसका सम कहां मिलेगा, करंट सम में, CS वेरिएबल में, ठीक है। यस सर। तो राइट हाफ का सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एरे, सम ऑफ एंटायर एरे माइनस CS, हो गया। यहां से यहां तक का सम तो ऑलरेडी मिला हुआ है CS में, है ना। यस सर। तो इसको कैसे निकालेंगे, पूरा सम का एरे का सम माइनस जो करंट सम है। और लेफ्ट हाफ को कैसा निकालेंगे, लेफ्ट हाफ को कैसे निकालेंगे? सर प्लस कर देंगे। नहीं, लेफ्ट हाफ को 1 से लेके i तक का सम मेरे पास CS में है, तो लेफ्ट हाफ क्या है, लेफ्ट हाफ क्या है, 1 to i -1, ये सारा एलिमेंट्स लेफ्ट हाफ का पार्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, CS माइनस ith एलिमेंट को CS से माइनस कर देंगे। अब क्या करो, इन दोनों सम को कंपेयर करो, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिलता है उसको प्रिंट करो और लूप ब्रेक कर दो, ठीक है। कोई इंडेक्स नहीं है, प्रिंट -1, दैट्स ऑल। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम इट इज। पता नहीं हार्ड दे दिया यहाँ पे तुम लोग को, डराने के लिए दिया था और कोई बात नहीं। ओके सर। सर तब भी अभी भी समझ नहीं आ रहा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन कभी किया नहीं है ना, किया यस है सर। पहले?
नहीं सर, 12th तक नहीं किया अभी तक। अरे भाई 12th तक कैसे करोगे, ये तो हमने भी कभी नहीं किया था। दिस इज कॉल्ड प्रेफिक्स मेंटेनिंग। प्रेफिक्स मेंटेन करके प्रॉब्लम करने को, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है, दिस इज कॉल्ड प्रेफिक्स मेंटेनिंग। 1D DP का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देखना है? नो सर, आज के लिए इतना काफी है सर, और सारे ठीक है। कर लेंगे सर। ठीक है, चलो खुद से ट्राई करना। Probably this is our last doubt class. Next week your projects will be beginning. Okay, after just a class your projects will be beginning. यस सर, आपने क्वेश्चन पूछा था ना सर, कैसे भूत चढ़ा सर। सर जी हमारे एथिकल हैकर है ना सर, उसी वजह से। कौन? अच्छा, एथिकल हैकर है, पर उसका कोडिंग से तो लेना देना नहीं है यार ज्यादा। एथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग बहुत बढ़िया आना चाहिए, ठीक है। यस सर। सर कई सारे सर है ना हमारे जो इस तरह कर रहे हैं, तो सभी सर उन्हीं की वजह से हुआ है। हैक करना बहुत अलग चीज है, याद रहे, ठीक है। हैकिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, यस ठीक है ना। नहीं सर, कई सारे सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है ना, तभी उन्होंने ठीक है। बता दिया यहाँ से कर लो तो। तब तो बढ़िया है यार, मैटर है तुम्हारा। बट स्टिल हैकिंग बहुत डिफरेंट लाइन में जाना पड़ता है तुम्हें। यस सर। ठीक है, वेरी डिफरेंट लाइन है। तुम्हें नेटवर्किंग का मास्टर होना पड़ेगा, 2-3 साल सिर्फ नेटवर्क के डोमेन में काम करना पड़ता है। उतना ज्यादा सिस्टम्स वगैरह का तुम्हें नॉलेज चाहिए कि कहाँ लूप होल्स है, वल्नरेबिलिटी कैसे मतलब एक्सप्लॉइट हो सकता है, बहुत बात है इसमें। मैंने भी सीखा था थोड़ा बहुत, बट भाई कभी ज्यादा एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता। और इसका मेजर डिसएडवांटेज जो है दैट इज, इसको प्रैक्टिस करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं भी एथिकल हैक कर लिए, ये नहीं हो सकता, ठीक तो है ना। मतलब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यस, ना करोगे तो सीखोगे कैसे। यस सर, ये तो है। नोबडी विल बी लिविंग। तो तुम क्या प्लेसमेंट्स दोगे यहाँ पे, या फिर अभी कॉलेज लाइफ में जाओगे, क्या करोगे इसके बाद? सर मुझे तो नहीं पता सर, अब देखते हैं सर, अच्छा हुआ तो देखेंगे। नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ से सीखना है सीख लो, बट एजुकेशन इज नेसेसरी। 4 साल पढ़ाई करो, बिकॉज तुम्हारा स्कोप कम जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा। नहीं सर, हम सोचे सर जॉब के साथ साथ नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो, वो बात नहीं, वही कर लेंगे। बट एक डिग्री होना चाहिए। एल्स अगर सोचते हो, बट बहुत सारी कंपनी कंसिडर नहीं करती विदाउट डिग्री, ठीक है ना। यस सर, ये तो है। तो सर बीटेक ले क्या? यस ऑब्वियसली, बीटेक। मैं भी खुद बीटेक हूँ यार, इसीलिए तो रिकमेंड करता हूँ। यस सर, ये तो है सर। CS उसमें कौन कौन से आपने सब्जेक्ट लिए थे बीटेक में, क्या क्या आते हैं? सब्जेक्ट नहीं आता, जो कॉलेज पढ़ाएगा उसे पढ़ना पड़ेगा, दैट्स ऑल। सब पढ़ोगे, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब कॉलेज में अलग से पढ़ोगे, ठीक है। ओके सर। सर उसमें भी कोई रिक्वायर्ड है सर? किस सा बैकग्राउंड होना चाहिए? नहीं, कुछ साइंस लेके पढ़ा है ना। नहीं सर। आर्ट्स लेके पढ़ा है। नहीं, कॉमर्स। कॉमर्स लेके पढ़ा है, तब तो भाई तुम्हारा एनालिटिक्स फील्ड ज्यादा बेहतर होगा। यस सर। कॉमर्स रोल में एनालिटिक्स, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस जगह पे कॉमर्शियल रिसर्च, फिनेंशियल रिसर्चेस वगैरह हेवी होता है, बहुत होता है। तुम्हारे लिए वो लाइन बढ़िया रहता है, रहेगा। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस वगैरह, पाइथन तो सीख रहे हो ना। यस सर। आगे ट्राई करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है बिल्कुल बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एनालिसिस अगर कॉमर्स लेके पढ़ा है, मैथ्स अच्छा लगता है, तो डेटा एनालिसिस की तरफ जा सकते हो, बहुत बढ़िया स्कोप है। डेटा इंजीनियर हो सकते हो यार, उसके बाद फर्दर मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, बहुत सारा जगह है ये सब चीज का। वो सबसे ज्यादा राइजिंग डोमेन है तुम्हारा प्रेजेंटली, सबसे ज्यादा आगे जा रहा है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट। सर आपको हम जैसे सर स्टूडेंट भी मिल गए सर। तुमको हम जैसा सर मिला, वो बात है। नहीं सर, वो नहीं बात है सर, क्योंकि सर यहाँ पे सब ज्यादातर ये है कि उनका डिग्री है हाथों में सर, तो मेरे पास वही है कि हम 12th पास किए हैं बस। तुमने कब 12 पास किया, इसी साल? यस सर, यही लॉकडाउन में। मैं पहली बार ऐसा किसी को देख रहा हूँ सीरियसली, मेरे आंखों के सामने ऐसा देखा है कि कोई मतलब 12th किया है पर फिर उसके बाद सीरियसली किसी और जगह जॉब में चला गया था, ऐसा मैंने देखा है। तुम्ही अरे को सर, देख
सर क्या करे सर, लॉकडाउन में बाय द वे स्कूल में पढ़ाई होनी नहीं है, उससे बढ़िया मम्मी पापा ने यही प्रेफर किया कि कर ही लो, उससे बढ़िया यहाँ से थोड़ा बहुत सीखते भी रहोगे, जैसे ऑनलाइन वहां पे क्लास होती है वैसे यहाँ पे भी होगी। हाँ तुमको इसी लाइन में करना है, कंप्यूटर में तो इंटरेस्ट था। और सर हाँ, ये बिल्कुल सही किया, तो लेना बहुत अच्छा किया जो किया। यस सर, अब सर चलो ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल का हो रहा है, कभी कभी लगता है सर। नहीं ठीक है, सबको लगता है शुरू में। ठीक है, क्या करते हो बीटेक में अगर कोई जाता है ना, तो उसको स्टार्टिंग में क्या करते हैं, पहले पाइथन सिखाता है, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज सिखाते हैं। फिर लैंग्वेज सिखाने के बाद डेटा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है ना, कॉलेज में ऐसे पढ़ाई होता है, डेटा स्ट्रक्चर सिखाते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के बाद एल्गोरिदम सिखाया जाता है अलग से, एल्गोरिदम्स का एक पूरा सेमेस्टर आता है, ऐसे तुम्हारा पढ़ाई होता है कॉलेज में। पढ़ाई होता नहीं है उतना, ठीक है, कॉलेज में कोई तुम्हें प्रोफेसर पकड़ पकड़ के नहीं सिखाएगा, पढ़ना है सर पढ़ो, वहां पे बताते हैं भैया लोग। ना पढ़ना है ना पढ़ो, ये बात है। Yes, और sir. यही बात है। भैया लोग यही बता रहे थे कि कॉलेज तो सिर्फ नाम का, सिर्फ डिग्री देने का है, स्टिल डिग्री वैल्यूएबल होता मेहनत है, तुमको करनी है। डिग्री वैल्यूएबल होता है। बहुत सारे कंपनीज, हम जब माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा आओगे तो आओगे 8+ CGPA लेके आना पड़ेगा, क्या करोगे, ठीक है ना, बोलता है, वो कहने की बात है कि हम बैकग्राउंड नहीं देखते, ये नहीं देखते, वो नहीं देखते। एक्चुअली में विदाउट बैकग्राउंड वो लोग किनको लेते हैं, जो इंडिया के टॉपर्स होते हैं, टॉप एक, जैसे बोलता हूँ तरनप्रीत सिंह, इंडिया में कोड शेफ में उसका टॉप 10 इंडियंस में से वो टॉप 10 कोडर्स में से एक था कोड शेफ में, ठीक है, तरनप्रीत सिंह की बात कर रहा हूँ, उसको गूगल में मिला था, ठीक है ना। यस सर, ऐसा केस होता है, एज इन नहीं कि मतलब कि, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ जानना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, वो तो चलो काम करते करते सीख ही जाओगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चलो Yes. खैर सही है यार। Thank स्वप्निल you. बड़ी देर से आए यार तुम आज, वरना मैं सोच ही रहा था कि डिस्कस करेंगे आज क्लोन ग्राफ, बट इन द मीनवाइल हमने ये ले लिया, डाउट्स ले लिया, क्लोन ग्राफ किए, देर हो जाएगा आज बहुत। ओके यार, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हेन आई कैन टेक, अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट सैटरडे डाउट क्लास, अगर हो सके तो क्लोन ग्राफ तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes sir. ओके, जितना किया समझ आया ना। Yes sir. ओके ठीक है, क्योंकि अगला तो तुम लोग, मैं और तो कोई सेशन होगा नहीं मंडे के बाद, ठीक है, सब तुम लोग का तुम्हारा ये हो जाएगा। मतलब आप नहीं रहेंगे सर अब? मैं रहूंगा, पर Yeah. तुम्हारा जो जैसे मेंटर सेशंस होता है ना, टेक्निकल मेंटर जो सेशन होता है प्रोजेक्ट में, Yes sir. तुम लोग स्लॉट बुक करोगे तब मैं आऊंगा तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए, कैसे प्रोजेक्ट को अप्रोच करोगे, ठीक है। Okay sir. इट्स नॉट कि आपका फॉर्मल सेशन होगा, अब ऐसा नहीं होगा, मंडे के बाद, मंडे इज द लास्ट, ठीक है। चलो सही, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं मंडे। Good night sir. या Thank गुड you नाइट, sir. थैंक यू या